Hello everyone, I'm Dr. Anshuman Pancholi. I'm your general surgery faculty for Digenov. The topic for today is very interesting. This is the topic which generally gets covered from the side of pathology, pharmacology, general surgery, and medicine. And in the ambit of so many subjects, what happens is we tend to miss out on the key concepts that are being asked in the examinations. So I've tried my best to cover as many concepts as possible from the perspective of surgery, also from the perspective of pathology as well as medicine. Right? So what are we going to cover in today's webinar? We'll be talking about the etiopathogenesis of inflammatory bowel disease. We'll be talking about how to differentiate between Crohn's disease and ulcerative colitis. We'll be talking about the management of inflammatory bowel disease. We'll be talking what is the role of, we'll be talking about what is the role of surgery and what are the surgical options in inflammatory bowel disease, mainly ulcerative colitis and Crohn's disease, and a little bit about the post-operative complications and their management, right? Okay, so let's begin. So inflammatory bowel disease basically is about the chronic idiopathic intestinal inflammation. Two words are important here, chronic and idiopathic. We don't really know what is the idiopathogenesis behind it. There are two major types of inflammatory bowel disease we talk about, that is ulcerative colitis and Crohn's disease. Okay, both of them are autoimmune conditions basically. So whenever we talk about autoimmune conditions, the most important thing we need to know is that they will be associated with some sort of autoimmune conditions. ये important concept है, याद रखना. जैसे ही हम extra intestinal manifestations की बात करेंगे, दोनों के अंदर ulcerative colitis as well as Crohn's disease, we'll be talking about the autoimmune conditions they will be associated with, and it is one of the important areas जहां से की questions बार-बार उठ के आते हैं. ठीक है. Let us understand what do we mean by autoimmune idiopathogenesis. So basically, those individuals who are genetically predisposed, in them what happens, there is a complex interaction between the intestinal microbiome or the intestinal microbiota and the immunity of the host. Now, because of this complex interaction and the genetic predisposition, what actually happens is there is some sort of abnormal mucosal immune responses which result in intestinal inflammation. And that is what leads to your colitis or your manifestations of your inflammatory bowel disease. Now, this was the basic idiopathogenesis. We'll be talking about the individual genetic predisposition factors as well. Coming on to the incidence. Now, fortunately, this disease is not very common in India. Iski incidence highest kahan par hai? In Europe as well as in North America. Europe, maybe Northern Europe, maybe. But the concerning fragment or the concerning segment is that slowly the incidence of this disease is on the rise in the other parts of the world, including Asia. Now, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका incidence बढ़ रहा है? तीन चीजें हैं बेटा, याद रखना. बेलेन लॉ में तीनों चीजें दी हुई हैं. It's important. Number one, improved public hygiene. Yes. हाइजीन बढ़ने से भी कभी कभी नुकसान होता है because you're not exposed to a certain amount of antigens that can lead to the predisposition to the development of abnormal immune responses. Second, dietary changes. Now, this is what has crept into our society. Earlier, if you remember, the Indian society was all about eating homemade food. Now, slowly, packaged and processed food has made way into our kitchen, and that is what has led to all sort of pro-inflammatory condition. अब आपको पता होगा बेटा pro-inflammatory क्यों? Preservatives which are added in the processed foods are the ones which are responsible for causing pro-inflammatory state. Nowadays, there's a lot of awareness going about it. There are a lot of webinars which are being conducted about the importance of consuming lesser amount of processed food. So all the young girls out there, all the young medicos who are suffering from acne are also predisposed because of pro-inflammatory foods. So if you're eating a lot of processed food, you're eating a lot of junk food, trans fats, please stop consuming that. Automatically, you'll be able to see a better response in your condition. Third risk factor, or the third overall incidence which is increased, is because of industrialization. अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, Crohn's disease की prevalence Ashkenazi Jews में ज्यादा होती है, 3 to 5 times. But the Jews in Israel are comparatively lesser affected. All of these things are mentioned in Vele and Laugh, 28th edition, and that is why they're important. They can come as an option in your examination. ठीक है? अब दो कंडीशन तो बेटा हमने डिफाइन करी, हमको पता है, एक हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा हो गया Crohn's disease. अगर you cannot differentiate between ulcerative colitis and Crohn's disease, what is the term then we use for it? We use indeterminate colitis. Roughly 10% of the patients fall under the ambit of indeterminate colitis. अब हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान रखते, सुनो ध्यान से. Crohn's disease and ulcerative colitis, ये दो कंडीशन है जो हमको पढ़नी है. हमने क्या किया,
ग्रॉस से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक हमने इंडिविजुअल पैरामीटर्स को दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद भी अच्छे से हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब आपकी तरफ, मेरी तरफ से लेफ्ट साइड इज Crohn's, राइट साइड इज ulcerative colitis. The same pattern is going to be followed till the end of the presentation. First thing that we're going to read about is the age of presentation. So in Crohn's we talk about two peaks. दो पीक आते हैं Crohn's में बेटा. एक होता है 25 से लेकर 40 साल तक, that is similar to ulcerative colitis. Ulcerative colitis में दो पीक नहीं होते, एक ही age group होता है, that is 25 to 40 years. In Crohn's disease we talk about two peaks. One is 25 to 40 and the other peak is at around 70 years. A very very important point. This is extremely important. ये एक बार पूछा जा चुका है. This has been asked once. What is the second peak for Crohn's disease? Next, gender. This is also very important. Crohn's disease is more common in females, whereas ulcerative colitis is more common in males. Important point. अब यहाँ आता है आपकी गुगली. एशिया में जो क्रोन्स का प्रेजेंटेशन है वो मेल्स के अंदर ज्यादा है, तो ध्यान से देखना पूछ क्या रहा है आपके एग्जाम के अंदर. इफ इट इज आस्किंग द प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोन्स इन एशियन पॉपुलेशन, मेल्स आर predominantly affected there. All of these are data and figures from 28th edition, updated edition of Bane and Love. These are new updates. You should be knowing these updates. ठीक है. Now coming on to the all important risk factors. ध्यान से, ये वो एरिया है जहां पर repeatedly questions आते थे. Nowadays they're asking less questions about it, but still it is important. Before we read about it, let me tell you one thing. Inflammatory bowel disease जो है ना, वो टॉपिक बेटा दो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक होता है FMG और दूसरा होता है INI-CET. Now, इसका मतलब ये नहीं है कि नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. See how it goes with the examination. You know, a topic remains dormant for some time, roughly 4-5 years it remains dormant, and then suddenly you have 2 or 3 questions coming from the same topic in the same examinations, and that is what leaves the students frustrated. यार ये important था नहीं, हमने पढ़ा नहीं, and now suddenly there are 3 questions coming out of it. Any trend which is there in INI-CET can always be replicated in NEET PG as well. So an important topic across INI-CET generally remains important for NEET PG as well. Risk factors पे आते हैं. Smoking बहुत important है. Ulcerative colitis में smoking protective factor है. Crohn's disease में smoking causative factor है. super important point. ठीक है. अच्छा, मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा हाउस एमडी के एग्जांपल्स देता हूँ. हाउस एमडी में एक एपिसोड में इसको मेंशन किया गया था. आई थिंक इट वाज एन एपिसोड वेयर इट वाज समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस एंड सांता क्लॉज. द पर्सन हु वाज द सांता क्लॉज, he presented to the OPD and he basically had symptoms of inflammatory bowel disease. He had diarrhea, he had bloody presentations, bloody diarrhea presentation. So what happened was, so our Dr. Rohnhaus prescribed him cigarettes. So he couldn't write cigarettes, so he wrote Cogerettes. That's what was the thing. And it is how cool, you know, you can prescribe cigarettes on TV shows only. You can't do that in actual clinical practice. But yes, if you have ulcerative colitis, smoking is known to be a protective factor. So smoking is causative agent in Crohn's, protective in ulcerative colitis. What all are the risk factors for ulcerative colitis? Refined diet, preservatives. अभी इसके बारे में हमने बात करी है. So preservatives containing diet or the refined diet is a risk factor because it leads to what is called as pro-inflammatory dysbiosis. वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सिक्रीट होते हैं, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू योर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑप्शन में आएगा. दैट प्रो इन्फ्लेमेटरी डिसबायोसिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स और अ फैक्टर इंपॉर्टेंट इन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रोन्स डिजीज. तो ये जो बड़ा सा वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ सैनिटेशन इन चाइल्डहुड. अभी हमने बताया इतना ज्यादा साफ सफाई की वजह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली क्रोन्स डिजीज. जेनेटिक फैक्टर ये है जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये नया क्वेश्चन नहीं है. दिस इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड. व्हाट जीन आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द NOT2 और द CARD15 जीन पॉलीमॉर्फिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ NICT में पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले. कहाँ प्रेजेंट होता है जीन बेटा? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16q. लॉन्ग आर्म पे प्रेजेंट होता है. IBD लोकस होता है. बेसिकली it is what is responsible for the strong familial association that is noted in cases of Crohn's disease. ठीक है. जीन का नाम याद रखना है, NOT2 CARD15. क्रोमोसोम कौन सा है? 16q. दिस इज द IBD लोकस. अब दो फिगर्स हैं जो आपको याद रखते हैं.
10% of the patients who have Crohn's disease will always have a first degree relative जिनके अंदर Crohn's आपको मिलेगा. दूसरा, concordance rate कितना होता है? 50% concordance is seen in cases of monozygotic twins. अब हमने IBD locus की बात करी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. IBD1 is present on chromosome number 16, that is specific of Crohn's disease, whereas IBD2 is present on chromosome number 12, that is associated with ulcerative colitis, पर ये उतना specific नहीं होता है. ठीक है, not 2 card 15 is specific for Crohn's disease. Site of involvement पे आते हैं बेटा. This is where again important questions. बोला ये जाता है कि हम Crohn's disease और ulcerative colitis को एक important pointer से differentiate करना है, तो वो ये है. Crohn's disease जो है, it can occur anywhere in the GI tract. Now, anywhere से क्या मतलब है? Right from the lips till the anal margin. This is what is a statement which is written in the books, and it's a very true statement. Can occur anywhere from the lips to the anal margin. So you have oral ulcers also as a manifestation of Crohn's disease. ठीक है? जबकि आपका ulcerative colitis जो है, it is restricted to the large bowel, मतलब colon and rectum. This is the area where it is restricted to. Now, ulcerative colitis basically starts from rectum. पहले ulcerative colitis की बात करते हैं, फिर Crohn's की बात करेंगे, ठीक है? Ulcerative colitis starts from rectum, that is proctitis. So we say rectum is the most common area involved in cases of ulcerative colitis. So rectum से start हुआ, ऊपर की तरफ extend हुआ, proximally into the colon, and that is how you have from proctitis, it can lead to colitis and pancolitis. Pancolitis matlab beta, colon along with the rectum, both are involved. That is what we call as pancolitis. Similarly, what can happen is that this inflammation can involve the terminal ileum. So basically, this is a secondary inflammation. Start hua and the inflammation extended only to the terminal ileum. This is what we call as backwash ileitis. अब ये बैकवॉश इलियाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना क्यों. देखो, ये तो अभी हमने पढ़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस. लेट्स गो बैक टू क्रोन्स एंड दैट्स व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकवॉश इलियाइटिस. ठीक है, ये देखो, हमने क्या बोला था? क्रोन्स कहां से कहां तक था? लिप्स से लेकर एनल मार्जिन तक. मोस्ट कॉमन साइट जहां क्रोन्स होता है, दैट इज डिस्टल आइलियम. डिस्टल आइलियम में होता है. ठीक है, इसके अलावा कहां का हो सकता है? हमने बोला बेटा कहीं भी हो, तो कहीं भी सकता है, लिप्स से लेकर एनल मार्जिन तक. मोस्ट कॉमन साइट इसकी हो गई डिस्टल आइलियम, अल्सरेटिव कोलाइटिस की हो गई रेक्टम. इसके अलावा डिस्टल आइलियम के अलावा वी कॉमनली फाइंड Crohn's in anal canal and large bowel. Anal canal again important. क्यों important है बेटा? Anal canal ये आपको दिख रहा है क्या इस साइड में? अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिल रहा है. So perianal involvement is a characteristic feature of Crohn's disease. So if there is inflammation in the anal region, you should not think of ulcerative colitis. You should be thinking about Crohn's disease. ठीक है? अब देखो, हमने क्या बोला कि यहाँ पे distal ileum is the most common site. So, as a usual presentation, ileum is involved where? Ileum is involved in Crohn's disease, but rarely in ulcerative colitis, we talk about a condition which is called as backwash ileitis, जहाँ की inflammation colon से होता होता small bowel को भी involve कर रहा है. That is what is called as backwash ileitis. अब काम की चीज ये समझने वाली कि backwash ileitis में केवल ileum involvement नहीं मिलेगा, rectum कोलन भी इन्वॉल्व होंगे, जबकि इन क्रोहन्स डिजीज आइसोलेटेड डिस्टल आइलियम भी इन्वॉल्व हो सकता है. इस तरह से आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे. समझ गए? बैकवॉश इलियाइटिस में आइलियम के साथ साथ कोलन और रेक्टम भी इन्वॉल्व होगा. अगर क्रोहन्स है तो आइसोलेटेड डिस्टल आइलियम भी इन्वॉल्व सकता है, बट इट इज इजियर सेड देन एक्चुअली अंडरस्टूड इन प्रैक्टिस. These two conditions are often difficult to diagnose. It's not a straightforward diagnosis. You need other investigations also to diagnose. But a theoretical point is clear. We have understood what is the difference between the two. So this is an important. You have to differentiate it from Crohn's disease. Now, in Crohn's disease, in ulcerative colitis, the most common lesion, हमने क्या बोला? Rectum most commonly involved होता है, तो most common lesion is going to be proctitis. Fifth point of difference, distribution. This is again very important. क्रोहन्स डिजीज जो होता है बेटा, वो ना एक पूरा लंबा सेगमेंट को इन्वॉल्व नहीं करता. देयर इज अ सेगमेंट ऑफ द बाउल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड, ऑफ द सेगमेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट व्हिच इज इन्वॉल्व्ड, एंड देयरफॉर वी फाइंड व्हाट आर कॉल्ड एज स्किप लीजन्स इन केसेस ऑफ क्रोहन्स डिजीज. वेरी इंपॉर्टेंट, very important point. Skip lesions are a feature of Crohn's disease. इसकी इंपॉर्टेंस आपको जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. तो सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट फीचर ऑफ Crohn's disease,
Continuous involvement is a feature of ulcerative colitis and therefore there are no skip lesions which are seen. तो आप मेरी अब मुझे आप सोच के बताइए एक बार, is it possible to go for segmental resection in cases of ulcerative colitis? No, you cannot, because there is an entire segment of the bowel wall which is involved. मतलब आप देखोगे कोलन पूरा इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि स्मॉल बाउल में एक लार्ज बाउल में एक सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ फिर थोड़ी देर डिस्टेंस छोड़ के दूसरा इन्वॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है. You cannot go for segment resection. You have to remove an entire length of the colon because it is complete involved. There's a continuous involvement. So you cannot cut a little segment and then anastomose. That is not a possibility. So segmental colectomy is never an option for ulcerative colitis because it's a continuous disease, whereas it is an option for Crohn's disease. As समझ में? Let's move on. चलो. Next thing, that is rectal involvement. Okay. अब हमने क्या पढ़ा था बेटा कि rectum is the starting point for ulcerative colitis. So it is commonly involved in ulcerative colitis, but this is a key point here that rectal sparing is a feature of Crohn's disease. It is very, very commonly seen in Crohn's disease. So rectum is spared in Crohn's disease. ठीक है? इसका भी implication पढ़ेंगे जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे. बेसिकली क्या इंप्लीकेशन होता है बेटा, रेक्टम जो है क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्वॉल्व होता है, जब हम सर्जरी करते हैं तो हम रेक्टम को भी रिमूव करते हैं. सो व्हाट वी गो फॉर इज कॉल्ड एज प्रोक्टोकोलेक्टम. प्रोक्टो मींस रेक्टम. सो प्रोक्टम इज अनदर वर्ड फॉर रेक्टम, राइट. ओरिजिनल आप सोचोगे तो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है जहां पे हम स्टोमोडियम प्रोक्टोडियम की बात करते थे. स्टोमोडियम इज द ओरल ओपनिंग एंड प्रोक्टोडियम इज योर एनल ओपनिंग, रफली दैट साइड, and that is what corresponded to the proctum. वो word वहां से निकल के आया proctum. So proctocolectomy मतलब कोलन के साथ आपने rectum को भी निकाल दिया. So proctocolectomy is done in cases of ulcerative colitis. तो क्या वहां पर ileum, कोलन हटा दिया अपन ने, लार्ज बाउल पूरा हटा दिया, तो क्या बचा? ileum बचा. आइलियम को हम रेक्टम से एनास्टमोस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मेनली रेक्टम ही इन्वॉल्व होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में. तो हम किसके साथ एनास्टमोस कर सकते हैं? एनल, एनल मार्जिन के साथ एनास्टमोस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज आईपीए. घबराओ मत, पढ़ेंगे इसके बारे में व्हाट इज आईपीए. whereas ileorectal anastomosis is possible in cases of Crohn's disease क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता. so it is not mandatory to remove rectum in cases of Crohn's disease. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, दैट इज एनल इन्वॉल्वमेंट. Anal involvement is very common. 50% patient in Crohn's disease will have anal involvement. किस तरह से involvement मिलेगा बेटा? You'll find fistulas and abscesses. एक word हमने पहले पढ़ा है, that is watering can perineum. There are a lot of sinuses and fistulas which are present in the region of perineum. Watering can perineum का एक cause Crohn's disease भी होता है. Whereas in ulcerative colitis, anal sparing is seen. Anal canal is not usually involved in cases of Crohn's disease. Next point of difference is the extent of involvement of bowel wall. अभी हमने पढ़ा बेटा entire thickness of the bowel wall will be involved in cases of Crohn's disease. So this is what we call as transmural involvement. Across the entire wall, there will be involvement, inflammation of the entire wall. Mucosa, submucosa, as well as serosa also will be involved. Whereas in cases of ulcerative colitis, what is going to happen? Only it's a superficial involvement. म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ही इन्वॉल्व होगी. अब इस एक जो कॉन्सेप्ट है इससे मल्टीपल आपके रैमिफिकेशन है. क्या रैमिफिकेशन है समझो बेटा, क्योंकि पूरी वॉल इन्वॉल्व हो रही है Crohn's disease में, so there is going to be a thickened wall. जब wall thickening होगी, this will lead to characteristic complications. क्या क्या complications? पूरी wall involved है, so there is an entire inflammation of the entire bowel wall. So what is going to happen? जब inflammation heal होगा, so there is going to be sticking of the lumen site. Lumen आपस में चिपकेगी, and that is what is going to lead to stricture formation. Fibrosis होगा, stricture बनेंगे. तो stricture कहाँ ज्यादा होंगे? क्रोन्स में ज्यादा होंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में होंगे? बाय डिफॉल्ट पूरी वॉल जहां इन्वॉल्व हो रही है, सो इट इज गोइंग टू बी मोर कॉमन इन केसेस ऑफ क्रोन्स डिजीज. दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बेटा क्रोन्स में? दैट इज योर फिस्टुला फॉर्मेशन. फिस्टुला फॉर्मेशन क्यों हुआ? हमने क्या बोला? बाउल की बाहर की लेयर सिरोसा भी इन्फ्लेम्ड है. तो दो लूप्स हैं जिनकी सिरोजास इन्फ्लेम्ड है, आपस में जैसे हीलिंग हुई तो चिपक गई एक दूसरे से, या फिर adjacent structure से चिपक गई. किससे चिपक सकती है? It can stick to the urinary bladder, it can stick to the vagina, it can stick to the uterus, it can stick to the adjacent loop of intestine. उस बेसिस पे हम अलग अलग फिस्टुला को डिफाइन करते हैं. ठीक है,
So let's read about it. Okay. So strictures क्या क्या हो गए? Due to healing after inflammation, ये हम बात कर चुके हैं. Fistula हमने बोला due to adherence of the bowel loops to the adjacent structures. क्योंकि inflame क्या हो गया है? Serosa inflame हो गया है, तो बाहर adjacent structure से भी चिपक सकती है. किस किस से चिपक सकती है? आपके loops of bowel. Number 1, urinary bladder से चिपका तो क्या बना आपका? Colovesical fistula. वेजाइना से हुआ तो कोलोवेजाइनल. बाउल से चिपका, अब किसी से पार्ट से भी चिपक सकता है. A loop of ileum can get stuck to the sigmoid colon. It can lead to a iliosigmoid fistula. Colon can get stuck, मतलब large bowel can get stuck to the duodenum, leading to a coloduodenal fistula. It can get stuck to the stomach, leading to the cologastric fistula. तो कोलोवेसाइकल और कोलोवेजाइनल ये आपके कॉमन होते हैं. इसके अलावा कोलोड्यूडेनल और कोलोगैस्ट्रिक भी मिल सकते हैं, आइलियोसिग्मॉइड भी मिलता है. तो ऑप्शन में ये आ चुका है क्वेश्चन. दिस इज समथिंग दिस हैज बीन आस्क्ड. यूजुअली दे आस्क अबाउट कोलोवेसाइकल एंड कोलोवेजाइनल. कोलोड्यूडेनल एंड कोलोगैस्ट्रिक वर आल्सो आस्क्ड. ये पीजीआई में मल्टीपल ऑप्शंस होते थे. दैट वाज व्हेन दिस क्वेश्चन केम, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट. दे कैन आस्क यू अबाउट दिस फिस्टुलास अगेन, कि इसमें से कौन से फिस्टुलास मिलते हैं. यूजुअली दे विल गिव ऑल ऑफ द अबव एज द आंसर व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम. ठीक है. So this was about the complications which were occurring because of the entire bowel wall involvement or transmural inflammation in ulcerative Crohn's disease. Ulcerative colitis में हमने बोला कि superficial involvement है, mucosa and submucosa involve हो रही है, तो क्या होगा? Benign growth होगी, that is what we call as pseudopolyps. अब ये बेटा बिनाइन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी में अल्सरेटिव कोलाइटिस में that ulcerative colitis is a pre-malignant condition. The chances of malignancy are more in cases of ulcerative colitis. Why? There is dysplasia which sets in the region where there is ulcerative colitis. अब उस वजह से हमें ये याद रखना जरूरी है कि pseudopolyps benign condition है. So in ulcerative colitis, whenever we talk of the occurrence of colonic carcinoma, they do not arise in the area of pseudopolyps. So कहाँ से arise होते हैं बेटा? From the areas of dysplasia, जिसको हम नाम देते हैं DALM, DALM, that is dysplasia associated lesions or masses. We'll read about it in a short while from now. So this was about the complications because of the varying types of inflammation. Next thing that we'll talk about as a macroscopic feature is the ulcers. Ulcers दोनों में मिलेंगे, क्योंकि there is a transmural involvement in Crohn's disease. You will find deep ulcers also called as serpiginous ulcers. And because of superficial involvement in ulcerative colitis, you will find superficial mucosal ulcers, जिनका नाम होता है collar button ulcers. ठीक है? So this is important. Few additional features जिन पे की questions आ चुके हैं that you should be knowing. The name itself is important and self-explanatory. These are features seen in cases of Crohn's disease. इसलिए left side में लिखे हुए बेटा creeping fat sign. What is creeping fat sign? When there is encroachment of the mesenteric fat around the bowel. ऐसा क्यों होता है बेटा? हमने ये पढ़ा है. Omentum is what? Omentum is the policeman of the abdomen. तो जहां जहां inflammation होता है, mesenteric fat जो होता है, वो भी inflammation को cover off करने की कोशिश करता है. Tries to limit the inflammation. Because there is serosal involvement, ऊपर वाली layer भी involved है, इसलिए mesenteric fat will be seen encroaching the bowel. This is what we call as creeping fat sign. So common sense क्या कहता है? कहां पर होता है inflammation? Bowel wall का भी, that outer wall. Serosa का inflammation Crohn's में होता है, तो creeping fat sign is going to be seen in cases of Crohn's disease. And another sign that is seen in Crohn's disease is cobblestone appearance of mucosa. बहुत बार, कम से कम 10 बार एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि cobblestone appearance is a feature of Crohn's disease. C से याद रखना, C for cobble, C for Crohn, C for creeping fat sign. ठीक है? This is because of edema, which is हमने बोला deep ulcers होते हैं जिनके साथ fissuring भी मिलती है. We'll be reading about it in the microscopic features. That fissuring because of deep ulcers is the feature of Crohn's disease, not a feature of ulcerative colitis. ठीक है? Now this point is what will be your question. कि अगर स्ट्रक्चर आपको बाकी पूरा प्रेजेंटेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा है, कोलोनोस्कोपी पे आपको स्ट्रक्चर्स दिखे, Crohn's disease में strictures मिल सकते हैं, and these are benign strictures. Whereas if you find strictures in ulcerative colitis, that would be indicative of what? It would be indicative of underlying neoplasm, because strictures are very, very rare in ulcerative colitis. This is characteristically mentioned and also seen in clinical practice. You'll be in love में दिया हुआ है. You should be knowing that stricturing, if noted in ulcerative colitis, usually is an indicative of an underlying neoplasm. ठीक है बेटा? चलो, ये हो गए हमारे मैक्रोस्कोपिक फीचर्स. लेट्स टॉक अबाउट दी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स. अब
based on the type of inflammation that we see, that is transmural inflammation and the mucosal or submucosal inflammation, transmural Crohn's and the superficial or the submucosal and mucosal involvement in cases of ulcerative colitis. Let us talk about the microscopic features. The key pathonomic feature of Crohn's disease is the presence of non-caseating giant cell granulomas. Very, very important point. ठीक है, रफली 60% पेशेंट्स में मिलेंगे, स्पेसिफिकली उन पेशेंट में ज्यादा मिलेंगे जिनके अंदर पेरियनल डिजीज प्रेजेंट है. दिस इज पैथोनॉमिक ऑफ क्रोन्स डिजीज. ये आपको पता होना चाहिए बेटा. अगर एक आंसर मार्क करना है स्पेसिफिक फॉर क्रोन्स डिजीज, कौन सी हिस्टोपैथ फाइंडिंग है? दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ नॉन केशिएटिंग जायंट सेल ग्रैनुलोमा. इंडियन पॉपुलेशन के अंदर इस तरह के ग्रैनुलोमास कहां मिल सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में मिल सकते हैं. नॉट नॉन केशिएटिंग, केशिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलते हैं, बट दे आर सीन इन केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोस पेशेंट्स. सो देयरफॉर tuberculosis happens to be one of the important differential diagnosis in cases of Crohn's disease. ठीक है? So this is what you should be knowing. Other important features already बात कर चुके हैं. That is filtering, that is seen because of the presence of deep ulcer. ये दोनों characteristic feature किसके हो गए? For Crohn's disease. Ulcerative colitis में एक feature, अगर एक आंसर आपको mark करना है, characteristic, that is crypt abscess. Though it is not pathognomic, crypt abscess are usually seen in cases of ulcerative colitis. And the other feature that you should be knowing is that there is no filtering, that is obviously there. Dysplasias or a pre-malignancy is what is associated with ulcerative colitis. Ulcerative colitis is a pre-malignant condition. We talk of dysplasia there, that is DALM. अभी हमने बात करी थी, dysplasia, associated lesions or masses. This is predictive of coexisting carcinoma, and this is going to be one of your upcoming questions in either INI-CET or NEET PG. They will talk about DALM is associated with which disease and what does it indicate. It is associated with ulcerative colitis and indicates an existing carcinoma. ठीक है? Other features क्या क्या होते हैं बेटा? Ulcerative colitis के you will find crypt distortion or crypt atrophy will be seen. There will be basal plasma cytosis. There will be mucosal villi irregularity. ये सारे चीजें usually नहीं पूछी जाएंगी आपसे, but rarely it can be asked. That's why from the point of view of coverage, I've given you these points as well. ये पैथो में भी वैसे कवर हुआ. अब ये तो सारे हमने बेसिक फीचर्स पढ़ लिए. Let's talk about the actual presentation of the patient. We'll talk about the clinical features of inflammatory bowel disease. Now, the clinical features of inflammatory bowel disease will depend upon three basic conditions. Diagnosis क्या है? Ulcerative colitis है कि Crohn's disease है? Number one. What is the location of the lesion? Lesion है कहाँ पर? Small bowel में है, large bowel में है? And what is the extent of the disease? कितना extent है involvement का? That is what will give you the clinical presentation. In general, जब हम बात करते हैं बेटा presentation की, how would a patient of Crohn's disease present? Usually we say small bowel, that is the terminal ileum or the distal ileum is usually involved. Based on that, we define the symptoms of Crohn's disease. Number one, because it is present in close association with ileocecal wall, appendix is present right at the IC wall, so therefore it can mimic appendicitis. So pain which is present on the right side, mimicking appendicitis, that is usually Crohn's disease. That is one of the important differentials of appendicitis is Crohn's disease. इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, जब भी whenever you find while doing an emergency appendectomy, if you find an inflamed distal ileum or terminal ileum, you do not directly go for appendectomy. Why? Because it is going to lead to the occurrence of fecal fistula. Inflamed ileum है, अगर आपका IC wall inflamed है, inflammation present है, तो क्या होगा? Healing नहीं होगी. जब भी आप close करोगे, healing नहीं होगी ढंग से, and it can lead to the formation of fecal fistula. So therefore, it is not recommended we go for hemicolectomy in such cases. That too, not hemicolectomy. We ask directly. Hemicolectomy is done when we are suspecting a tumor, a carcinoid which is being suspected, but there is inflammation. We do not directly go for immediate surgery. We go for specialist approach. Specialist को बुला के पूछते हैं. A senior surgeon is usually called in to take a decision. Emergency में क्या होता है? Generally, in our tertiary setups, what happens is either it is the senior resident or it is the junior residents who are operating. Therefore, they are not supposed to take decisions in such cases. You always need to call a senior surgeon in such cases. How to go about this condition or this situation wherein you have a inflammation of the ileum associated with appendicitis. Okay? Okay. Next condition or next feature of Crohn's disease is abdominal pain. Then you also have diarrhea. अगर Crohn's disease का presentation puberty से पहले है बेटा, you can also have retarded growth and retarded sexual development. This is an important thing. This is not something which you can derive out of common sense. इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि growth retardation and retardation of sexual development is also seen in cases of Crohn's disease.
अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करते हैं बेटा, यूजुअली कहां से स्टार्ट होता है? रेक्टल इन्वॉल्वमेंट इज यूजुअली सीन, सो यू फाइंड ब्लडी डायरिया, दिस इज व्हाट। अच्छा, अब देखो दो चीजें होती है, रेक्टल ब्लीडिंग is slightly different from bloody diarrhea, but because there is involvement of colon as well, so you generally have a presentation of bloody diarrhea. अगर isolated rectal involvement है तो rectal bleeding आपको मिलेगी, ठीक है। Other than that, you can have urgency, you can have presentation of anemia because there is a loss of blood. You can also have hypoproteinemia. अब ये एरो क्या बता रहा है आपको? व्हाट इज दिस एरो टेलिंग यू? दिस एरो इज टेलिंग यू दैट व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज बाउल ऑफ कोलन, मतलब टर्मिनल कोलन अगर आपका क्रोहन्स में इन्वॉल्व हो रहा है तो क्रोहन्स कैन आल्सो गिव राइट्स टू ब्लडी डायरिया, यूजुअली अ फीचर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस but can be seen in Crohn's disease as well. So it is easy for me to just tell you कि ये इस तरह का presentation है, ये common. This is a common presentation. This is not the presentation in every case. इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लेन सिम्टम्स के बेसिस पे कभी भी डायग्नोसिस मत बनाना। ऑलवेज रीड द एंटायर क्लिनिकल स्टेम, वो कोई ना कोई और हिंट देगा स्पेसिफाई करने के लिए। द आंसर इज आइदर क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। या तो वो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देगा, या वो रेडियोलॉजिकल कोई फीचर्स देगा, या फिर कोई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन करेगा। That is how you will reach to the answer. Do not jump onto the answer looking at just the symptomatology. ठीक है, ये एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? ओके, राइट। अब ये वो क्वेश्चन है जो कि इस बार INI-CET 2024 में पूछा गया था। सो ट्रू लव एंड बिट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सिवियरिटी ऑफ कोलाइटिस। उन्होंने पूछा था कि ट्रू लव एंड बिट्स क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज होता है? दैट इज फॉर द सिवियरिटी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये बेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है नीट पीजी में भी और INI-CET में भी। नाउ इट डिवाइडेड बेसिकली इनटू 4 कैटेगरीज। माइल्ड डिजीज का मतलब व्हेन देयर आर लेस देन 4 stools per day with or without bleeding and there are no signs, systemic signs of toxicity. What is a moderate disease? Stool frequency बढ़ गई, वहां less than 4 थी, यहाँ पे more than 4 हो गई, and there are either no signs or few signs of systemic toxicity. There is mild anemia and the inflammatory markers can also be raised. ESR raise हो सकता है, CRP raise हो सकता है। What is severe disease? The stool frequency shoots up to more than 6 bloody stools per day. अभी तक ऊपर केवल stools बात कर रहे थे, bloody stools की बात नहीं हुई थी। Severe disease में for the first time we talk about bloody stools, that is more than 6 per day. There are signs of systemic illness which are grossly manifested now. You also find hypoalbuminemia, which is the ominous sign, which is not a good sign. Inflammatory markers are raised, anemia and fever is there. And lastly, when we talk about fulminant disease, यहाँ more than 10 bloody movements are noted, bowel movements are noted per day. Obviously, this is bloody diarrhea here. Systemic signs of toxicity are grossly visible. There is anemia, there is continuous bleeding, hypoalbuminemia, and one important feature, you will also find toxic megacolon in these cases. Fulminant cases में आपको toxic megacolon भी मिलेगा। नाम ही बता रहा है मेगा कोलन। सो हाउ डू यू डायग्नोज टॉक्सिक मेगा कोलन? बेटा आप एक्सरे लोगे, एक्सरे एब्डोमेन, ट्रांसवर्स कोलन का जो डायमीटर है व्हेन इट इज मोर देन 6 सेंटीमीटर, दैट इज व्हेन वी डायग्नोज एज अ टॉक्सिक मेगा कोलन। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज यूजुअली suggestive of disintegrative colitis, and it's an indication for emergency surgery because there is an increased risk of perforation. Very very important. टॉक्सिक मेगाकोलन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, आपको एक इमेज भी दिखाएंगे टॉक्सिक मेगाकोलन की। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अगला क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, अभी हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस का, दैट वाज ट्रू लव एंड बिट्स क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन का नाम अब जो पूछा जा सकता है वो है क्रोहन्स डिजीज का नाम, that is Crohn's disease classification, that is Montreal classification. अब Montreal classification में बेटा क्या क्या चीजें होती है? Let's read about it. So we talk about A, B and L. A stands for age at diagnosis. इसमें तीन चीजें होती है बेटा, A1, A2, A3. A1 stands for less than 16. A2 is 17 to 40 and A3 is more than 40. So A1 is less than equivalent to 16. B stands for behavior और what is the progression of the disease like. याद रखिए किसकी बात हो रही है? मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है फॉर Crohn's disease. पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किसका क्लासिफिकेशन है? मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन Crohn's disease का। अब अगर एग्जामिनर ने और इन डेप्थ पूछा तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो B1 would be an whole plain inflammation, B2 when the disease is stenosing, B3 when it is penetrating, and P, ठीक है, B1, B2, B3 and P when it is involving the perianal region. तो P जो है वो B1, B2, B3 के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। We know perianal involvement is seen in about 50% cases of Crohn's disease. And the L part is indicating the location of the inflammation. क्या लोकेशन है inflammation की?
L1 when the location is in the ileum, that is ileal. L2 when it is colonic. L3 when it is involving both the colon as well as the ileum, that's ileocolonic. And L4 is again, it can be added to any three of the above. It is involving the upper digestive tract. ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस पढ़ाया, रीजन बीइंग कि इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं. Once they have started opening the Pandora box, these questions can be asked again anytime. So to love and weights, acute severe ulcerative colitis, Montreal classification for severity of Crohn's disease. अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा डिजीज की एक्सटेंसिवनेस होगी, मोर एक्सटेंसिव द डिजीज, मोर आर लाइकली द चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन. एक और बड़ा टॉपिक आया जिसपे की क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, दैट इज एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन. अब क्या क्या मैनिफेस्टेशन होता है बेटा, याद करते हैं हम. सबसे पहले एक चीज हमको पता थी कि बिकॉज दे आर ऑटो इम्यून कंडीशंस, तो उनके साथ एसोसिएटेड और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी होगी. ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. Whichever autoimmune disease you have read about, you often read about that there is some other associated autoimmune conditions. Same is the case here as well. First, we talk about the hepatobiliary extraintestinal manifestation. The first thing that we talk about is PSC, that is primary sclerosing cholangitis, seen more commonly with ulcerative colitis as compared to Crohn's disease, where in specifically we say that it is in younger patients. So हम जब बात करते हैं PSC की, without inflammatory bowel disease, उनके अंदर comparatively later present करता है, whereas if it's in a patient who has inflammatory bowel disease, the primary sclerosing cholangitis is going to affect the younger subset of the population. Males are more commonly affected in such cases with IBD, whereas in general we talk about females being more affected in cases of primary sclerosing cholangitis. वो पेशेंट्स आईबीडी के जिनके अंदर HLA-B8 या HLA-DR3 पॉजिटिव है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस है पीएससी के. अब बेटा इतना सारा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं पीएससी के बारे में, क्योंकि पीएससी स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में. एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है, ये तो पूछते ही हैं, इसके अलावा ये सारे पैरामीटर्स पूछे जाते हैं सुपर स्पेशलिटी में भी और आपके एग्जाम में. There is an increased risk of colon carcinoma in a patient with IBD and PSC as compared to a patient of IBD alone. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अकेले अल्सरेटिव कोलाइटिस में जिसके अंदर पीएससी नहीं है, उसके अंदर भी कोलन कार्सिनोमा का रिस्क है. बट अगर आईबीडी अलोंग विद पीएससी हो गया तो क्या हो गया, दुगनी प्रगति हो गई. दोनों आपके बेनिफिट इज मोर, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ द कैंसर, नॉट ऑफ द पेशेंट. कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं व्हेन यू हैव अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस अलोंग विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. द नेक्स्ट हेपाटोबिलियरी extraintestinal manifestation is cholelithiasis. ये आपको मिलता है ज्यादा Crohn's disease के अंदर. अब बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, डिस्टल आइलियम जब भी इन्वॉल्व होता है, that's what is most commonly involved in Crohn's disease. तो डिस्टल आइलियम हमने पढ़ा है हमारे सर्जरी मॉड्यूल्स में से, is responsible for what? For the absorption of bile salts and returning it back through the hepatobiliary. आपका जो portal circulation होता है, that is what is responsible. The bile salts are returned back into the circulation because of the absorption from the distal ileum. Now, because of the involvement of the distal bowel, distal ileum, अब distal ileum या तो involved है या फिर resect off हो गया है, इसीलिए उनका absorption impair हो गया है, impaired absorption of bile salts, and that is what predisposes to gallstones or cholelithiasis. Other extraintestinal manifestation, mainly hepatobiliary, is fatty liver, and the last one is cholangiocarcinoma. अब आता है क्वेश्चन, क्या पूछा जा चुका है इसमें से. दो कंडीशन एक्स्ट्राइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन हेपाटोबिलियरी आपके कौन कौन सी, दिस इज पीएससी. सो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा, इनके ऊपर कोई भी कोलेक्टमी का असर नहीं पड़ता. कोई भी कोलेक्टमी से मतलब ये है कि अगर आपने इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज की के लिए सर्जरी करी है, तो यूजुअली ये देखा जाता है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं. बट ये दो कंडीशंस हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा, इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. द डिजीज कोर्स इज नॉट अफेक्टेड. यूजुअली लिवर फेलियर एनसी हो जाता है, एंड देयरफॉर वी नीड टू गो फॉर, आपको हेपाटिक रिप्लेसमेंट मतलब हेपाटिक ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है. कोलेक्टमी से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन दो कंडीशंस के ऊपर, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली पीएससी पे. तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, which of the extraintestinal manifestation is usually not affected with colectomy or by colectomy? The answer is PSC. ठीक है, बाकी सब पे फर्क पड़ता है. Next subset is skin. Skin में आते हैं erythema nodosum. This is the most responsive with colitis management. जो भी आपकी कोलेक्टमी करते हो उससे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है this erythema nodosum पे. दूसरा pyoderma gangrenosum, and the third one is oral ulcer. इनके एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है. आई में कौन कौन से हो गए बेटा, यूवियाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, क्लेराइटिस, आयराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस.
हेमाटोलॉजिकल हम बोलते हैं मेनली एनीमिया, ब्लड लॉस है, तो यू आल्सो हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मस्कुलोस्केलेटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, मस्कुलोस्केलेटल में हम यूजुअली बात करते हैं पॉलीआर्थराइटिस की, दिस इज यूजुअली सीन इन केसेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। कौन से आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे? मल्टीपल जॉइंट्स, पॉलीआर्थराइटिस। एसिमेट्रिकल लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व, कौन कौन से? नी, एंकल, एल्बो एंड रिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा sacroiliitis, and the third is ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis associated with HLA-B27. ये important point है. And last, this is also something that has been asked. रीनल इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है यूजुअली क्रोन्स डिजीज में। नेफ्रोलिथियासिस से सीन किस तरह का स्टोन मिलता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, दिस हैज बीन आस्क्ड। किस तरह का स्टोन मिलता है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज सीन इन केसेस ऑफ पेशेंट्स विद इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये मैंने आपके जेनाइटो यूरिनरी मॉड्यूल्स में कवर किया है जब मैंने स्टोन्स पढ़ाया आपको, ठीक है। Now, coming on to the complications of inflammatory bowel disease. क्या क्या complications होते हैं बेटा? First, we talk about the complications of Crohn's disease. हमने क्या पढ़ा था बेटा? Strictures and fistula. We already talked about these complications. पहले Crohn's कंप्लीट करते हैं, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। फिस्टुला हमने कौन कौन से बता दिए थे? We talked about the colovesical, colovaginal, colodudinal and cologastric fistula. अब यहाँ पे अलग से क्यों मेंशन किया है, उसका रीजन हमने आपको एक फिस्टुला बताया था, आइलियोसिग्मॉइड फिस्टुला। ये है आपका पोटेंशियल एमसीक्यू अब आने वाला। आइलियोसिग्मॉइड फिस्टुला की क्या स्पेशलिटी है बेटा? कि जब भी पेशेंट में आइलियोसिग्मॉइड फिस्टुला बनेगा, मतलब फिस्टुला बिटवीन आइलियम एंड सिग्मॉइड, तो आपने बीच की पूरी कोलन क्या हो गई? बाईपास हो गई, सीधा आइलियम कनेक्ट हो गया सिग्मॉइड से। तो अब आपका दिमाग ये कहेगा कि बिकॉज देयर इज प्रोफ्यूज डायरिया, सो बेसिकली द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू what is the reason for profuse diarrhea seen in a patient with ileosigmoid fistula? The common sense states that because there is no absorption of water which is happening directly, the contents of small bowel are going into the sigmoid colon and then getting evacuated. That is the reason for the profuse diarrhea, but that is not the case. ये पहली जगह है यहाँ पर जहाँ common sense नहीं चलेगा। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देर इज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, द कोलोनिक फ्लोरा इज गेटिंग incubated in the small intestine. That is what is leading to profuse diarrhea due to bacterial overgrowth, small bowel colonization with the colonic flora, and that is what is leading to profuse diarrhea here, not due to the rapid passage of small bowel contents. ठीक है बेटा? So this is what is the reason for the occurrence of profuse diarrhea in ileosigmoid fistula. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, this is a upcoming question. अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी है, दैट इज टॉक्सिक मेगाकोलन। टॉक्सिक मेगाकोलन मतलब मोर देन 6 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? यू विल फाइंड सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, फीवर होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट विल बी रेज्ड एंड इट विल बी डायग्नोज्ड ऑन एक्सरे एब्डोमेन। एक्सरे एब्डोमेन में आप देख पाओगे कि आपका ट्रांसवर्स कोलन डायलेटेड है, मोर देन 6 सेंटीमीटर का डायमीटर। What is the approach to a patient with toxic megacolon? याद रखना ये emergency condition है. You start with the medical therapy. You keep the patient nil per oral. You give IV fluids. You give IV antibiotics. Still, if it is not controlled, you go for decompression. और अगर decompression भी fail होता है, you have to go for laparotomy. Why? Because not only there is an increased risk of colonic perforation. अगर colonic perforation हो गया toxic megacolon के patient में, the chances and the mortality goes up significantly. 40% mortality is associated with the patients who have colonic perforation in toxic megacolon, and therefore it is always better to manage and intervene before there is perforation. ठीक है? Okay, next thing. ये कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसके अंदर ना कम से कम 6-8 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक में से, दैट इज कैंसर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, क्या था कि सूडो पॉलिप से अराइज नहीं होता। कहां से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द DALM, दैट इज डिस्प्लास्टिक साइट्स, नॉट फ्रॉम सूडो पॉलिप्स। द रिस्क इज इंक्रीज विद द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होता जाता है। बेसिकली हम ये बोलते हैं कि डिजीज जब से 10 साल, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस टिल द अकरेंस ऑफ द डिस्फेवियर, यूजुअली वी से द ड्यूरेशन इज 10 years. So at 10 years the chances of the percent is 1% risk. ठीक है? At 20 years it is 10 to 15%, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, what is the risk when is the risk 20%? It is at 30 years from the onset of the disease. ये परसेंटेजेस पूछी जा चुकी हैं, that is why this is important. ठीक है? Now next important point here is that जितना ज्यादा extent of involvement होगा उतने ही ज्यादा रिस्क होगी। Next thing, what are the risk factors associated? अब क्या
ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि कैंसर डेवलप हो जाए। नंबर वन, उन पेशेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था जिनके अंदर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस है, द रिस्क इज मोर एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट। नंबर टू, व्हेन देयर इज पैनकोलाइटिस। नंबर थ्री, when the disease is diagnosed at young age, and number four, when there is high grade dysphagia। क्वेश्चन ये पूछा था कि the risk factor or the risk of occurrence of cancer is not associated with the grade of dysphagia। True statement, false statement? This is a false statement। जितना ज्यादा ग्रेड होगा डिस्प्लेसिया का उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कार्सिनोमा के। बेटा ध्यान दो, क्या होता है ना कि आप पढ़ते सब कुछ हो, यू रीड अ लॉट एंड यू ट्राई टू रिमेंबर अ लॉट, बट दैट इज नॉट हाउ इट यूजुअली वर्क्स। जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट इज व्हाई योर क्वेश्चन बैंक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाटएवर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज इट दैट दे आर वांटिंग टू नो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा टॉपिक एंड टू एंड पता हो, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल भी नहीं है। You should be aware of the areas from where the questions are being asked. I'm doing that work for you. What you need to do is you need to revise along with me, solve the question banks along with me, and that is what is going to lead to success. ठीक है? Next thing. अब एक और टॉपिक, एक और पॉइंट पूछा जाता है बेटा कि क्या प्रोग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस एसोसिएटेड कोलन कार्सिनोमा का प्रोग्नोसिस खराब होता है एज कंपेयर्ड टू स्पोरेडिक कैंसर? दैट इज नॉट द सेम, दैट इज नॉट द केस, इट इज द सेम, प्रोग्नोसिस सेम होता है। ये कैंसर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड यू हैव मल्टीपल सिंक्रोनस कोलन कैंसर दैट कैन बी सीन। इसीलिए एक जगह पर है इसका मतलब नहीं कि उसको हट गया तो कैंसर की रिस्क कम हो गई। यू कैन हैव मल्टीपल सिंक्रोनस कोलन कैंसर्स एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। Next component of the discussion is investigation, very important। इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमको पता है कि कोलन और रेक्टम तक सीमित डिजीज है। 10% patients can have backwash ileitis, so because it is restricted to colon and rectum, our investigation of choice is going to be colonoscopic biopsy। Now this question was asked in AIMS long time back, what are the indications of colonic biopsy? अब long time back से मतलब ये नहीं कि कोई 20 साल हो गया बेटा, it is roughly around 7 to 8 years back this question was asked, but still a relevant question there in the 20th tradition of Bailey and Love, you should be knowing this topic well। Number one, to establish the extent of inflammation। अब establish तो करना है extent of inflammation, इसका मतलब ये नहीं कि recklessly colonoscopic biopsy हो। What do we mean by not doing it recklessly? If the patient has severe acute colitis, this is contraindicated, and this is the new question that will be asked। उन्होंने पहले ये पूछा था कि क्या हम टॉक्सिक मेगाकोलन के अंदर डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी कर सकते हैं क्या? नो, दैट इज नॉट ट्रू, यू कैन नॉट डू इट इन टॉक्सिक मेगाकोलन। नाउ व्हाट दे आस्क इज, कैन यू डू इट इन सीवियर एक्यूट कोलाइटिस? यू कैन नॉट डू इट इन सीवियर एक्यूट कोलाइटिस। कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सच केसेस। ठीक है बेटा? Okay, next indication is to distinguish between ulcerative colitis and Crohn's disease। Next one is to assess for malignancy, and the last is to monitor the response to treatment। ये आपके indications हैं colonic biopsy के, colonoscopic biopsy के in cases of Crohn's disease। Now, एक और scoring, total 3 scoring है इस topic से जो आपको याद रखनी है। True Love and Wits was the first one, Montreal for Crohn's was the second one, and now third one is again for ulcerative colitis, that is the scoring system to assess the ulcerative colitis activity। The name is Mayo score, very important, ये भी पूछा जा सकता है। This is again a potential MCQ topic। क्या measure करता है Mayo score? It tells you about the disease progression and response to treatment। अब पूरा मेयो स्कोर समझने की जरूरत नहीं है, आपके 20th एडिशन में पूरा मेयो स्कोर दिया है। व्हाट द लास्ट इज द पैरामीटर्स दैट आर इंक्लूडेड इन मेयो स्कोर। क्या क्या इंक्लूड है बेटा? स्टूल फ्रीक्वेंसी, रेक्टल ब्लीडिंग, डिजीज एक्टिविटी ऑन फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, एंड ग्लोबल असेसमेंट। ये 4 पैरामीटर्स आपके मेयो स्कोर में इंक्लूड है। इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। दिस इज द न्यू टॉपिक। ठीक है, अब समझो क्या होता है। एक अच्छे स्टूडेंट जो कि रैंक लगाता है और दूसरा स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट होता है या नहीं सिलेक्ट होता, उसके अंदर अंतर यही होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। A student who's scoring a good rank not only catches the older questions in the previous topics in the trend, he also knows what can be potentially asked because he's paying more attention to the faculties when they're discussing the potential MCQs। ठीक है, केवल क्वेश्चन बैंक पुराने PYQs से कुछ नहीं होता। मे बी यू कैन स्कोर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रॉस कर सकते हो, बट रैंक नहीं लगा सकते बेटा। अच्छी रैंक के लिए आपको नए क्वेश्चन भी सही करना जरूरी है। एंड देयरफॉर 2 थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिवीजन, ये 2 आपके सक्सेस मंत्र हैं जो आपको याद रखने हैं आपके सिलेक्शन के लिए और अच्छी रैंक के लिए। ठीक है, मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। 2 नाम आपको याद रखने हैं, इमेजेस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पाइप स्टेम कोलन एंड लेड पाइप साइन, ये दोनों कहां मिलते हैं बेटा? अल्सरेटिव कोलाइटिस में।
Crohn's disease ये पूछा जा चुका है. Investigation of choices CT enterocolitis. CT enterocolitis. ठीक है, contrast के थ्रू हम CT करते हैं देखने के लिए. What is the first sign that is seen? That is aphthous ulcer. This is important. Target sign. And one more sign जो कि नेम साइन पूछा जाता है Crohn's disease में, that is string sign of Cantor. इसकी इमेज हम आपको दिखाएंगे. This is the terminal ileal stricture which is seen in cases of Crohn's disease. Again, not a very specific feature, also seen in cases of bowel tuberculosis. ओके, अब इतना कुछ कर लिया, पेशेंट के बारे में सब कुछ समझ लिया. अब सर बताइए मैनेज कैसे करेंगे पेशेंट को. तो मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट बेसिकली. ठीक है, इसमें इसीलिए इसको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं. मेडिसिन वाले भी पढ़ाते हैं, सर्जरी वाले भी पढ़ाते हैं, पैथो वाले भी पढ़ाते हैं, फार्मा वाले भी पढ़ाते हैं. क्यों? क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है बेटा. सो बेसिकली we start with medical management in both ulcerative colitis as well as Crohn's disease. The first and majority of the patients are managed with medical management. Now, in majority of the patient, medical management is good enough for the remission of the disease. अब remission लाने के लिए क्या-क्या drugs use होती हैं? Let's talk about them. First of all, mainstay in both ulcerative colitis as well as Crohn's disease is steroids. ठीक है, अब वो हम topically या rectal route से दे सकते हैं, systemic route से दे सकते हैं. Prednisolone is what is usually used. The second option that we have is 5-aminosalicylic acid derivatives, 5-ASA derivatives. ये भी again हम topically या systemic दे सकते हैं. Question पूछा जा चुका है, 5-ASA का mechanism क्या होता है? They are inhibitors of the COX enzyme or they inhibit prostaglandin. This has been asked. ठीक है, क्या drug most important याद रखनी है आपको? Sulfasalazine आपको याद रखनी है. ये सिंगल एजेंट्स की तरह भी यूज हो सकता है बेटा. कहां पर? व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली रेक्टम. सो इन अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस दे कैन बी यूज्ड एज सिंगल एजेंट्स. as well as that you can use them as maintenance therapy following a remission. मतलब स्टीरॉइड्स दे आपने रेमिशन में लेके आए और उसके बाद आप 5-ASA को यूज कर सकते हैं. Nowadays they are generally used in combination. Now I am not going into the details of how these drugs are used. There are two approaches for it. It's an escalation approach, there is a top down approach. I'm not going into the details because I'm sure medicine में उसको cover किया गया होगा. And also that is not something which is routinely asked nowadays. They're only asking about the drugs, specifically the new drugs that have been added in the 20th edition of Bail and Love. These drugs you're supposed to know. I'll be discussing them in a short while from now. Third category is immunosuppressants. We already read about this in pharmacology. Azathioprine and cyclosporin are used in the management of inflammatory bowel disease. Monoclonal antibodies. कौन सी दो monoclonal antibodies यूज हुई बेटा? Infliximab and adalimumab. दोनों ही TNF alpha के अगेंस्ट एक्ट करती हैं. इन्फ्लिक्सिमैब आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं. आपकी अडालीम्यूमैब जो होती है वो सेल्फ एडमिनिस्टर भी की जाती है. एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में दिया जाता है. अब एक पॉइंट इंटरेस्ट के लिए, बहुत सारी सर्जरी पढ़ी है. ये XI का मतलब क्या होता है? What kind of an antibody, whether it is a human antibody, it's a chimeric antibody. So XI would be your chimeric antibody. ठीक है, XI means chimeric and U alone means only human, purely human, and you use ZU, that is something that indicates a humanized antibody. ठीक है, so adalimumab is a purely human monoclonal antibody. न्यू ड्रग्स में आते हैं बेटा. दिस इज वेयर इज द एरिया जहां पर की अब क्वेश्चंस आएंगे. ये 20th edition of Bail and Love में मेंशन्ड है. You should be knowing these topics and these drugs very well. The first drug that we need to know is ustekinumab. Ustekinumab is an inhibitor of IL-12 and 23. Next category of drugs you should be knowing is vedolizumab and itrolizumab. किसके inhibitors है बेटा? Anti-integrin. Very very important. Next is tofacitinib. Tofacitinib किसका inhibitor है बेटा? Janus kinase inhibitor, JAK inhibitor. And the last drug that you should be talking about and knowing is ozanimod, that is an inhibitor of sphingosine 1 phosphate receptor modulator. It's not an inhibitor, it's a receptor modulator, S1P. ठीक है, ये अगर आपको मेडिकल मैनेजमेंट से अब मेरी अगर बात मानकर एक चीज पढ़नी है तो ये 5 ड्रग तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए. These are the new areas जहां से की क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, चलो अब आता है वो टॉपिक जहां पर मेरी इंपॉर्टेंस आती है. दैट इज इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी. मेरा रोल या जनरल सर्जन या किसी भी गैस्ट्रो सर्जन का रोल कहां आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में? व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी? सो आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड इन दिस in the my modules in surgery. When you'll be going through them, you'll be getting to know that a good surgeon is not somebody who knows how to operate. A good surgeon is the one who knows when to operate and specifically knows when not to operate. कब नहीं जाना है और ऑपरेट नहीं करना है, ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, now what are the indications for operating in cases of ulcerative colitis? Number one is when you have an intractable disease. Severe fulminant disease है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट से. That's when you need to go for surgery. Number two, we are talking about the indications in ulcerative colitis. Pretty much overlapping indications है ulcerative colitis और Crohn's disease के. We'll discuss the ones in Crohn's disease as well. ये आपके again upcoming questions में से है.
Second thing is when you have a chronic disease, when there is anemia, there is increase in the stool frequency, urgency, and tenesmus. बेटा देखो क्या है ना, ये इंडिकेशन ऑफ सर्जरी अक्सर बोरिंग लगते हैं, आपको लगता है यार कैसे याद रखेंगे, बट दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है ये तो, कि इंटरैक्टेबल है, ठीक नहीं हो रहा है, मेडिकल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सर्जरी करनी पड़ेगी। क्रॉनिक डिजीज है, लंबा चला रहा है, अगेन वुड नॉट बी रिस्पॉन्डिंग, एनीमिया है, ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट को, स्टूल फ्रीक्वेंसी है, परेशान हो रहा है बार बार, तो देन दैट इज व्हेन यू नीड टू गो फॉर सर्जरी। When there is a steroid dependent disease मतलब remission maintain करने के लिए, मतलब disease symptomatology को कम करने के लिए या disease symptoms को खत्म करने के लिए आपको steroid की dose continuously बढ़ानी पड़ रही है। We need to increase the steroid dose. Steroid के साथ क्या effect है? Side Steroids are going to lead to side effects, and therefore we cannot continuously keep giving steroids, and therefore we need to go for surgery when there is a steroid dependent disease. Steroid हटाते से ही disease वापस अगर आ रहा है, we need to go for surgery. कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिकल थेरेपी के, कौन कौन से? मेनली एजाथायोप्रिन हम यूज कर रहे थे, इम्यूनोसप्रेसेंट, उसका साइड इफेक्ट हमको पता है, पैंक्रेटाइटिस होता है, एंड स्टेरॉइड्स आर नोन टू कॉज साइकोसिस एज वन ऑफ द साइड इफेक्ट, और दूसरे भी होते हैं, साइकोसिस भी होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स हमने पढ़ा था बेटा, क्रोन्स डिजीज अगर प्यूबर्टी से पहले सेटल होता है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स में, दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर सर्जरी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी अगर ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ है तो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। If there is a neoplastic change that is visible, malignancy set in अगर हो गई, so you have to go for surgery. Ulcerative colitis with primary sclerosing cholangitis and indication for surgery. Extraintestinal manifestations important. कुछ मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक होते हैं, कुछ में सर्जरी करनी पड़ती है, पर इन जनरल इफ यू आर आस्क्ड एक्स्ट्राइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन इज एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी, एब्सोल्युटली 28 एडिशन ऑफ बेनियल में क्लियरली दिया हुआ है, हैव नो कंफ्यूजन अबाउट इट। एंड लास्ट वन इज सीवियर हेमरेज और स्टेनोसिस कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, चलो, this were the obstruct, these were the indications for surgery in ulcerative colitis. Coming on to what all surgery is done in cases of ulcerative colitis. अब बेटा देखो, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने क्या बोला था कि आपका डिजीज जो है कोलन और रेक्टम, दिस इज वेयर इट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो अगर आपने इस एरिया को पूरा निकाल दिया सर्जरी से, तो क्या आपने डिजीज को क्योर किया है कि सिम्प्टोमेटिकली मैनेज किया, क्योर कर दिया? ऐसा तो नहीं है ना, क्रोहन्स डिजीज जैसा कि कहीं पर भी हो सकता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कोलन एंड रेक्टम, एंड देयरफॉर इफ यू डू अ प्रॉपर कोलेक्टमी, आपने बेसिकली क्यूरेटिव इंटेंट के साथ सर्जरी करी है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्जरी इन अल्सरेटिव कोलाइटिस can be a curative intent surgery, but that cannot be the case in cases of Crohn's disease. Crohn's disease में आप सेगमेंट रिमूव करोगे पूरा, ऐसा तो नहीं है ना जहां जहां हो रहा है वहां पे काटते गए काटते गए काटते गए, there is a limitation to resection, you just cannot end up resecting the entire bowel there, स्मॉल बाउल भी इफेक्ट हो रही है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। So therefore curative intent is only indicated or can be done with in cases of ulcerative colitis. तो इमरजेंसी में क्या सर्जरी करते हैं, केवल सर्जरी के नाम आपको पता होना चाहिए, बेसिक टेक्निक पता होना चाहिए, डोंट नीड टू गो इनटू द इंडिविजुअल सर्जरी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो इन इमरजेंसी द बेसिक सर्जरी दैट इज डन एंड द सेफेस्ट वन इज सब टोटल कोलेक्टमी, और आइलियम का एक पार्ट आपने निकाल दिया स्टोमा की तरह, दैट इज एंड आइलियोस्टोमी बेसिकली। सो व्हाट यू हैव डन इज, जितना पार्ट कोलन का अफेक्टेड था वो पार्ट निकाल दिया, जो स्टम्प बचा हुआ था रेक्टम वाली साइड में, मतलब रेक्टम के साथ जो भी था उसको आपने क्लोज ऑफ किया, एंड आइलियम का स्टोमा निकाल दिया। सो प्रॉक्सिमल स्टोमा निकाल के आपने डिस्टल पूरा क्लोजर कर दिया है। सो देयर इज एन एग्जिट रूट आउट फॉर द कंटेंट्स, एंड दैट इज व्हाट इज डन इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। आपका डेफिनेटिव प्रोसीजर यू डिले करते हो जब तक कि पेशेंट को ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज जनरली पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बट अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैल एब्जॉर्प्शन एंड डेफिशिएंसी ऑफ फैट एंड विटामिन्स आर यूजुअली सीन इन केसेस ऑफ क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस, कहां होगा बेटा? क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज मैल एब्जॉर्प्शन होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है कि इन्वॉल्व नहीं होती? तो अगर मैल एब्जॉर्प्शन किस में होता है पूछा जाए, द आंसर इज क्रोन्स डिजीज, बट न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन आपको दोनों में करना पड़ता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, elective. Now, elective surgery when needed for ulcerative colitis, that is what is the question that is often asked, that is total or restorative proctocolectomy. Colon remove कर दिया, rectum remove कर दिया, along with ileal pouch anal anastomosis, J pouch हम बनाते हैं बेटा, basically आइलियम का एक पाउच बनाया और उसको एनल एनास्टेमोसिस किया। उसका क्यों बनाते हैं पाउच? ताकि एक नॉर्मल बाउल फंक्शन जैसा आ जाए। ये पूछा जाता है आपसे, बार बार पूछते हैं कि आइलियम का पाउच क्यों बनाया, सीधा आइलियम को क्यों नहीं जोड़ दिया? क्योंकि नॉर्मली भी क्या होता है, आपके जो फीसेस होते हैं दे आर स्टोर्ड, जब आप चाहते हो दैट्स व्हेन यू डेफिकेट ना, ऐसा तो नहीं होता है कि आप सीधा जब आया मर्जी से, इनकॉन्टिनेंट तो नहीं है। तो नॉर्मल बाउल फंक्शन की तरह एक रिजर्वॉयर फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए वी क्रिएट अ आइलियल पाउच। ठीक है, ऑलराइट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IPAA? It is pouchitis. This is very important.
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. 50% of the patients you can have pouchitis because of the inflammation. Management, you give antibiotics, metronidazole, and ciprofloxacin is used. Coming on to the indications of surgery in Crohn's disease. The first one is if there is side effects of steroids. Second, if there are complications. Strictures है, fistula. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्वेश्चन है बेटा? क्या हम एंडोस्कोपिक डायलिटेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं क्रोन्स डिजीज के स्ट्रक्चर्स के अंदर? तो यस यू कैन. कौन से स्ट्रक्चर में? ये इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट लेस देन 5 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर विच इज फाइब्रोस्टेनोटिक, एंड दैट इज द एरिया जहां पर आप एंडोस्कोपिक डायलिटेशन अटेम्प्ट कर सकते हो. बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में यू हैव टू गो फॉर स्ट्रक्चरोप्लास्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अदर इंडिकेशन ऑब्वियसली विद एन इंट्रैक्टेबल डिजीज यू हैव टू गो फॉर दैट. कोई रोल नहीं है सेगमेंटल रिसेक्शन का. कहां पर नहीं होगा सेगमेंटल रिसेक्शन का? ये किसके लिए लिखा गया है बेटा? दिस इज फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस. ठीक है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में सेगमेंटल रिसेक्शन का कोई रोल नहीं है. सेगमेंटल रिसेक्शन का रोल क्रोहन्स में है क्या? बिल्कुल रोल है सेगमेंटल रिसेक्शन का. ठीक है, क्योंकि सेगमेंट्स में डिजीज हो रही है, सो यू कैन गो फॉर सेगमेंटल रिसेक्शन देयर. राइट. क्या सर्जरी होती है बेटा? हमको पता है क्यूरेटिव इंटेंट से सर्जरी नहीं हो सकती. बेसिकली हम कंजर्वेटिव सर्जरी कोशिश करते हैं करने की. जितना इन्वॉल्व सेगमेंट है उतना ही रिमूव करेंगे ताकि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम ना हो जाए. Now, a basic concept that need to be understood from the perspective of ulcerative colitis and Crohn's disease. Mainly Crohn's disease, क्या perspective है बेटा? You need a multidisciplinary team, that is fine. You need an aggressive physician जो कि बहुत अच्छे से medical management करे. And the surgeon has to be a conservative surgeon. खींच के सर्जरी करे. खींच के सर्जरी मतलब जितना पार्ट इन्वॉल्व है उतना ही काटना है. रैंडमली कुछ भी नहीं काटना है. So aggressive physician and a conservative surgeon is what is needed in the management of Crohn's disease. ठीक है बेटा. अब क्रोन्स जो है वो क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज होता है. सो डिस्पाइट ऑफ द ऑपरेशन द चांसेस आर कि आपको थोड़े दिन बाद फिर से री ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए. ठीक है. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या टॉपिक है बेटा? इसमें नया क्वेश्चन आएगा. दिस इज अगेन अ टॉपिक फॉर न्यू क्वेश्चंस. What are the risk factors for the development of intra-abdominal septic complication in Crohn's disease? मतलब ऑपरेशन से पहले ही Crohn's में क्या फैक्टर्स हैं जिनको देख के आप बता सकते हो कि एब्डोमिनल सेप्सिस के चांसेस रहेंगे सर्जरी के बाद. नंबर वन, if the patient is taking high dose steroid therapy. What do you mean by high dose steroid therapy? More than 10 milligrams of prednisone अगर 4 हफ्ते से ज्यादा ले रहा है सर्जरी से पहले, that is a high risk indicator for a intra-abdominal complication, septic complication. Second, if there is a current prescription or ongoing प्री-ऑपरेटिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, मतलब रिसेंटली 14 दिन के अंदर अंदर ही उसने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ली है, तो भी एक रिस्क है इंट्रा एब्डोमिनल सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन का. थर्ड रिस्क फैक्टर इज अगर सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, मोर देन 10% प्री मॉर्बिड वेट लॉस है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सीरम एल्बुमिन अगर कम है, एंड लास्टली इफ देयर इज अ कोएग्जिस्टिंग एब्डोमिनल सेप्सिस. दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, यू शुड बी नोइंग दिस. ठीक है. So now we are coming to the end of the theory part of the discussion. अब आते हैं हम interesting वाला side में बेटा. आपसे questions पूछूंगा मैं. You should be answering the questions that I'll be asking you. Okay. All right. So let's start with the questions. Number one, true love and which classification is used for? This is the question that was asked in INI-CET. This is the recent question. This is used for acute severe ulcerative colitis. Very good. Whoever have answered B, it's a correct answer. You have been very attentive throughout the lecture. Please remain attentive like this. See, majority of the questions अगर आप ध्यान से lecture सुनोगे और एक बार भी आपने within 3 to 4 days lecture को revise कर लिया. So there is a standard pattern of revision that you need to know. एक बार टीचर से सुना, एक बार खुद से पढ़ा. इसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 24 आवर्स का. And if you revise it once more within a week along with the question bank, that topic will be yours forever. ठीक है, हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगा. You do not have to set in a separate date for revision. Revision हमेशा ही पढ़ाई के साथ साथ ही चलता है. नया टॉपिक पढ़ा, पुराने को रिवाइज किया, नया टॉपिक पढ़ा, पुराने को रिवाइज किया. You don't set in with a big goal ना कि I'll finish all my subjects till what, December, and then start my revision from January. That is not how we approach. We finish a subject, and while we are on the new subject, we start revising the subject that we have finished. Okay? All right, next question. So this was the recently asked one. So I've divided the questions into 3 categories: the recently asked ones. Then I'll be discussing the questions that have been asked in the previous year questions. Okay, थोड़े पुराने questions हैं. And the last segment would be the new questions that I am putting forth, which are the new pointers that I've added in the discussion. Okay, the first question. A 45-year-old female presented with recurrent bloody diarrhea. ठीक है, recurrent bloody diarrhea है female. Colonoscopy reveals multiple serpiginous ulcers.
Imaging revealed multiple strictures in the small intestine. क्या क्या चीजें मिल रही हैं बेटा? We are having multiple serpiginous ulcers. Multiple strictures हैं किसके अंदर? Small intestine के. What is the most likely diagnosis options? Radiation enteritis, ischemic bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease. What are the answers usually coming for? Okay, Himlata says option number D. So you all are right. You have got the concepts correctly. So basically, it's not just about the recurrent bloody diarrhea. मैंने आपको ये समझाया था कि recurrent bloody diarrhea, though usually seen in cases of ulcerative colitis, will not be a restricting criteria. ऐसा नहीं कि bloody diarrhea तो ulcerative colitis ही है. If it is present along with multiple serpiginous ulcers and multiple strictures, मतलब आपको characteristic documenting signs मिल गए हैं Crohn's disease के, small intestinal involvement मिल गया है, that is indicating towards Crohn's disease. So the answer is option number D. Very good. Next question, that is, which amongst the following is or are true regarding Crohn's disease? अब इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है? This is just to test your knowledge. A, it can occur anywhere in the GI tract from mouth to anus. B, ulceration and किसके बारे में पूछा है? ध्यान से है ना, Crohn's के बारे में पूछा जा रहा है. Ulceration and fistulization is less common in Crohn's disease than ulcerative colitis. Cigarette smoking is protective in Crohn's disease, and rectum is frequently involved in Crohn's disease. So, which amongst the following is or are true? एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है. So let's put in the answers in the chat. Okay, SDGG says A and C is correct. Come on, other answers. So majority of you have marked more than one option as correct. Let's read the options carefully. True about Crohn's disease. It can occur anywhere in the GI tract from mouth to anus. This is definitely true. Ulceration and fistulization is less common in Crohn than ulcerative colitis. Is it true? बेटा फिस्टुला कहाँ ज्यादा बन रहा था? जहां पर कि पूरा बाउल इन्वॉल्व हो रहा था, transmural inflammation was happening, and that is why fistula was being formed, because the serosa itself was getting inflamed and that was getting stuck to the neighboring structures, and that was leading to fistula. So it is not less common in Crohn's, it is more common in Crohn's. So this is not true. Cigarette smoking is protective in Crohn's. जिसने भी C mark किया था, you're not listening carefully. Cigarette smoking was protective in ulcerative colitis. It was causative in Crohn's disease. इसीलिए पढ़ी हुई चीजें भी गलत करके आते हो. Simple question, just testing whether you have revised well. Rectum is frequently involved. No, rectal sparing is seen. So the answer is option number A only. Only one option is correct. So, right? So that is what you need to know. Okay, the answer is A. Okay, next question. Now, don't start answering before I finish reading the question, okay? I'll give you time to answer. A patient presented with a chronic history of diarrhea and blood in the stools. Workup revealed multiple fistulae in the perineum and multiple small intestinal strictures. Which among the following is the most likely diagnosis? Radiation enteritis, ischemic bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis. Go, start answering. This is pretty much the same question that I had asked earlier. The answer is option number C, it's Crohn's disease. Again, diarrhea and blood in the stool is misleading. It can be seen in both ulcerative colitis and Crohn's disease. What is the characteristic notch here for the answer? Multiple fistulae in the perineum, watering can perineum, and multiple small intestine strictures are characteristically sealing the diagnosis. None of these will be seen in radiation enteritis में आपको बहुत ज़्यादा fistulae perineum में नहीं मिलेंगे, stricture मिल सकते हैं. Ischemic bowel disease also will not have multiple fistulae in the perineum. Crohn's disease is the one which is going to have. So the answer is Crohn's disease. ठीक है? चलो. Next question. Which among the following is true regarding ulcerative colitis? Rectal sparing is often seen. Option number A, ध्यान से है ना, don't get it wrong. I've taught you very carefully. Read very, very carefully before answering this question. This is a slightly tricky question. Rectal sparing is often seen. It is a pre-malignant condition. Almost always leads to toxic megacolon. Cobblestone mucosa is a characteristic feature. True बताना है, ध्यान से. Go. So all of you are right. You've read the question carefully. Very, very good. The answer is it is a pre-malignant condition. Confusion सिर्फ एक option में था. That is option number C. A और D obviously गलत है.
it does not almost always lead to toxic megacolon. No, toxic megacolon is not a common presentation. It is seen, but not so commonly. Almost always leading to toxic megacolon. Medical therapy and management often leads to remission in ulcerative colitis. Okay, chalo, next question. Now coming on to the lot of the expected questions in the upcoming examination. जो भी अभी INI-CET और NEET PG में appear हो रहे हैं, they should be extra attentive now. These are the new questions that have been framed from the 20th edition of Bailey and Laugh. ये मैंने नए frame किए हैं. You'll not find them in any books. Please pay attention and take a snapshot of these questions. इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा. ठीक है? Question number 1. Which of the following is true regarding, again, we're asking about true condition regarding Crohn's disease. More than one can be correct, okay? Just to help you out. Option number A, Montreal classification ABL is used for Crohn's disease based on age of diagnosis, progression, and location. Please wait for me to complete the question. I want to see the responses, okay? So the first option is done. Option number B, increased fecal calprotectin is a useful predictor of Crohn's disease. Option number C, profuse diarrhea in ileosigmoid fistulation as a complication of Crohn's disease is due to rapid passage of small bowel contents into the colon. And option number D is endoscopic dilatation is a viable option for less than 5 centimeter fibrostenotic strictures. A and B in option A, Y, L. So if you have been looking at, we discussed that Montreal classification के तीन बेटा हमने पढ़े थे, age, behavior, and the lesion. कहाँ पर location है उसकी? So L stands for location there, okay? So that is why L is there, okay? All right, let's discuss the question and answer here. Montreal classification ABL, age of diagnosis, behavior of progression, and the location is used to for Crohn's disease based on the age of diagnosis, progression, and location, right? So this is the true option. Option A is correct. Increased fecal calprotectin is a useful predictor of Crohn's disease. This is also true. ऐसा क्यों किया मैंने? Because I want you to understand that everything that you read is not something that is going to come in the examination. कुछ ना कुछ नया आएगा. तो ये तो multiple choice है. It's not your fault. Therefore, the ruling out is extremely important in the examination. This is a correct option. अगर आप notes बना रहे हो, please note it down that the increased fecal calprotectin is a predictor of Crohn's disease, also used to monitor the response to treatment in Crohn's disease. There is a deliberate reason why I've given this option here so that you understand that everything will not be from the notes. कुछ नए questions भी आएंगे, कुछ googly भी आएंगे, कुछ bouncer भी आएंगे. You should be able to adapt. You should understand कौन सा question step down question है जो नहीं समझ में आ रहा है. Leave that question. And if you feel 2 or 3 options are within your ambit, then attempt that question depending upon how the rest of your examination is going. Okay, so the option number B is also correct. Profuse diarrhea in ileosigmoid fistulation as a complication of Crohn's is due to rapid passage of small bowel contents into the colon. ये characteristically गलत है. मैंने बताया था rapid passage से नहीं होता है. किसकी वजह से होता है? Bacterial overgrowth की वजह से. Last option, endoscopic dilatation is a viable option for less than 5 centimeter fibrostenotic strictures. That is absolutely correct. So we have option number A, that is correct, and option number B. So A is correct, B is correct, and option number D is also correct. Okay. All right. Next question. Which of the following is associated with Crohn's disease? ठीक है. ये already एक बार आ चुका है, फिर भी expected है वापस. A, P53 gene, B, NOT2, CARD15 gene, C, BRCA1, and D, APC gene. What should be the answer? Rosie Paul is saying B. Sudarshan is saying B. Costa is saying B. So all of you are absolutely correct. This is B, NOT2, CARD15. You shouldn't be getting this wrong. It's a very important question that you should be knowing. Next question. Okay. Question that you should be knowing. Next question. Which among the following is not an indication for colonoscopy in a patient with ulcerative colitis? This is the area मैंने आपको बोला था. ये question आ चुका है एक बार पहले. There's some time back this question was asked, but still remains relevant. It is there in the 20th edition of Bailey and Love. You should be knowing this criteria. Option A, to monitor the response to treatment first. Option B, diagnosis of severe acute colitis. Option number C, differentiated from Crohn's disease. And option number D is establish the extent of inflammation. Not पूछा है. ध्यान से पढ़ो and now go answer. बहुत बढ़िया. You guys are really intelligent. You are listening to everything that I've been saying. I'm really happy that I've been able to give you this concept, which is not a straightforward concept. Usually बच्चे जल्दी जल्दी में mark करते हैं कि ये तो होगा ही.
It's absolutely true. The answer is option number B, diagnosis of severe acute colitis. It is contraindicated in severe acute colitis because there is a risk of perforation. Similarly, पहले क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था उन्होंने ऑप्शन नंबर बी की जगह मेंशन किया था that it is used for the diagnosis of toxic megacolon. That is also not true. So दो गलत ऑप्शन हो गए बेटा, diagnosis of severe acute colitis and diagnosis of toxic megacolon दोनों के लिए यूज नहीं किया जाता है. It is not used for these two purposes. ठीक है, वेरी ओके ये तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए बेटा. लेट्स डायग्नोज दीज एक्सरेज. अब मैं आपको थोड़ी सी क्लिनिकल हिस्ट्री बता देता हूं ताकि आपको लगेगा कि क्या दे दिया एकदम से. लुक एट दिस इमेज बेटा. I am saying that this patient is somebody who is having, it's a 45-year-old female who has bloody diarrhea. ठीक है. So we are suspecting that this patient is having ulcerative colitis. Now, what is the diagnosis of this X-ray? What is this showing? Ulcerative colitis का patient है. क्या दिख रहा है ये मैंने आपको बता दिया कि डायग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस. नाउ टेल मी व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज बीइंग शोन इन द एक्स-रे हियर. टॉक्सिक मेगाकोलन इज द करेक्ट आंसर. सो दिस इज टॉक्सिक मेगाकोलन. अब एक बेटा ध्यान रखना, ये जिस जो भी टॉक्सिक मेगाकोलन बोल रहे हैं, ठीक है. ओके, सो द इमेज इज शोइंग मेगाकोलन. ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ना. डोंट जस्ट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स. इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज दिस इमेज शोइंग, दिस इमेज इज शोइंग मेगाकोलन. ठीक है, व्हाई? ये जो है आपका डायमीटर जो है ट्रांसवर्स कोलन का, ये 6 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर आपको दिख रहा है, मोर देन 6 सेंटीमीटर आर्बिट्ररी. नाउ व्हेन विल वी कॉल इट टॉक्सिक? जब साथ में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये बोलेगा कि पेशेंट को फीवर है, उसका टीएलसी बढ़ा हुआ है, ये साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी है. अभी ये साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं थे, मैंने आपको बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उसके अंदर ये डेवलपमेंट हो चुका है, एक्सरे दिख रहा है. But you all are correct. It is toxic megacolon eventually. This is what has been developed. But remember, toxic कभी भी एक्सरे को देख के नहीं बोल सकते. Toxic is a clinical presentation. आया समझ बेटा? The signs of toxicity will be visible. Fever होगा, TLC raised होगा patient को, severe pain में होगा patient. This is what you need to document along with the X-ray. So this is an X-ray showing megacolon in a patient of ulcerative colitis. Probably it's a toxic megacolon. ठीक है? All right, last X-ray for the day. That would be wrapping up our discussion on inflammatory bowel disease. What is this showing? Again, this is a patient who is tentatively having Crohn's disease. Go. What is the X-ray showing? Anand Shekhar says string sign of Cantor. Okay. Anybody else? Obstruction, Arunachalam. Okay. Apple corkscrew. Okay. Let's get back to it. One of you were right. This is actually a stricture which you can see. This is characteristically your string sign of Cantor. This is the cecum that is visible here, right? This is the small bowel that is visible. This is the terminal ileal stricture that we were talking about. This is your string sign of Cantor. Okay, beta? So with this, we come to the end of discussion of this session. I hope you've got the concepts that I wanted to give to you. Okay.